A very good morning to all of you. Welcome back to the channel. So let's start with the analysis for 26th of October 2023. So here we see that firstly, a small update as far as we were seeing that tensions between India and Canada were growing up. So month after suspension, India partially resumes the visa services for Canadians because one impact which we expected would be again on the hospitality sector, on the tourist. So as a relief, this has been again resumed after almost suspension of 1 month. So that's a small update. So when we talk about कि NCERT टेक्स्ट बुक्स में वर्ड इंडिया को अगर हम भारत से रिप्लेस कर देंगे, सो हेरन औशिक, व्हाट डू यू थिंक कि इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, या फिर इज इट लाइक सूटेबल और नॉट, या इसको नहीं करना चाहिए, या करने के बाद भी कोई ऐसा मतलब फर्क नहीं पड़ेगा? I think it is suitable because at least the people would know, students would know that Bharat is also the name of India because constitutionally, because many of the people know that India is called Bharat, but they do not know that Bharat is mentioned in preamble of the constitution. तो वो पता चल सकेगा और वो सिंपल है, ज्यादा इसमें कंट्रोवर्शियल हाँ, चीज नहीं। इसको अगेन मतलब पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए, बस इतना हम बोल सकते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलता है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो थिंग्स को मतलब पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए, दैट्स ऑल। So when we talk about the state of Maharashtra and how we are seeing rising, transforming, and it is prospering. So जब हम थोड़े developmental projects की बात करते हैं, तो specifically we are seeing like new Darshan Q complex have been formed, state of art facilities for the devotees. जब again हम pilgrimages की बात करते हैं, कुछ ऐसी sites हैं, so we can also get a rough idea about कि project की cost कितनी है. And as we know again कि जो Maharashtra state है, that is again the financial capital of India. Then dedication to the nation, left bank canal network. जब again हम बात करते हैं irrigation facilities की, तो Nilwande Dam has been constructed, so we can again remember the name of the dam here. Then apart from this, 4 laning of the Sangli to Borgaon section. So again, this is part of the capital expenditure. We are seeing how infrastructure has been created. So again, construction of national highways, expressways have been taken up. Railway lines, expansion of the railway networks been happening. Electrification of, again, the road railway section. So even जब हम बात करते हैं पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, तो दैट इज बीइंग इंश्योर्ड, बट एट द सेम टाइम जब हम इवन इंटरनल सिक्योरिटी से भी एक बात इस चीज को रिलेट करते हैं, तो सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड देन रोड को भी हाउ वी आर इंश्योरिंग कि दी जब प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो कौन सी साइट पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बिकॉज अगर रोड पे होंगे तो ऑब्वियसली दैट वुड बी लीडिंग टू लॉट ऑफ ट्रैफिक जैम्स एंड ऑल ऑफ दैट. तो कहीं ना कहीं चीजें इंटरनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड है. डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल फैसिलिटीज, जब हम बात करते हैं मनमाड गैस टर्मिनल पे, so that's their stoning of the maternal child health wing that is happening, Ayush hospitals at Ahmednagar civil hospital. So these are certain measures. And when we talk about again sabse zyada comparatively, we are seeing the amount that is being getting invested is for the canal network project. So स्टेट ऑफ महाराष्ट्र अगेन मोस्ट ऑफन वी सी की ड्रॉट लाइक कंडीशंस भी देखी जाती है. तो हाउ इरिगेशनल नेटवर्क को इम्प्रूव करने के लिए कंस्ट्रक्टिंग ऑफ डैम्स एंड वाटर मैनेजमेंट इज गोइंग टू हेल्प in this particular aspect. So that is being again looked into. So here we see कि Kerala police, it books the online movie reviewers and social media platforms. So let's look into this case.
So here we see Ernakulam Central Police have booked 7 major online movie reviewers and social media platforms on a petition by a film director. So among the accused, there is a owner of a cinema promotion company is there, person with a Facebook account under this name, YouTubers are involved. जब हम again बात करते हैं रिव्यूअर्स की, तो बेसिकली कहीं ना कहीं इसको हम बोल सकते हैं again, this is somewhere leading to suppression of your right to dissent, and कहीं ना कहीं the fundamental right to freedom of speech and expression का भी violation देखा जा रहा है. But again, जब तक कि जो आपके व्यूज हैं, जिस तरीके से आप उनको एक्सप्रेस कर रहे हो, जब तक वो पब्लिक इंटरेस्ट को हैम्पर नहीं कर रहे, इट इज नॉट इंसाइटिंग वायलेंस, तब तक अगेन दैट होल्ड्स कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड एज वेल. सो herein the film owner has again registered a complaint against these online movie reviewers. So movie का review देने में I don't think so ऐसा कोई problem है. I think we have problems in even review. जरूरी नहीं है कि हर टाइम हम वायलेंस की बात करें. वायलेंस से अलग भी एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलिज्म की फीलिंग भी क्रिएट होती है, तो वो भी सॉर्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट को अगर हैम्पर नहीं कर रहा है, जब तक वो सब चीजें इंक्लूड हो जाएंगी उसमें. So herein necessary action under the provisions of Information Technology Act that should be taken against those who indulge in such an action, where we see कि recently the High Court of Bombay said कि जो reviews थे by the anonymous persons that may present opportunities for a person to act maliciously with the intent to blackmail or extort. So these were the concerns. मानसी ऊपर एक करना, जो निपा वायरस है वो आप ले सकते हो. Nipah virus antibodies found in Waynard bats. तो जब हम बात करते हैं zoonotic diseases की, and recently we saw an outbreak in Kerala as far as the Nipah virus is concerned. So Kerala, it will intensify the disease surveillance activities and maintain vigil against Nipah, as Nipah virus antibodies they've been detected in the bats in the Waynard. So जब हम बात करते हैं हमारे हेल्थ केयर सेक्टर की प्रिपेयर्डनेस की कितनी रेजिलियंस है, एंड फ्रीक्वेंट आउटब्रेक स्पेसिफिकली हमें केरला में देखने को मिल रहे हैं निपा वायरस के. सो अगेन यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाती हैं जब हम बात करते हैं वन हेल्थ की. सो wherein again zoonotic diseases are also interrelated, and again this जब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो it is again so bat to human transmission, that is also possible. So NIV antibodies, and they have been detected in the Pteropus bat species in 14 states. So and one of the union territories as well. So even इसका possibility of outbreak in other states वो भी एक important aspect हो जाता है. So क्या lessons learn किए केरला ने from this entire experience? They are very important. And again वैक्सीन की जब हम बात करते हैं, although we are not having that right now, public awareness short term के लिए बहुत important हो जाएगा. Training also of the healthcare persons, कैसे आप उसको deal करोगे अगर there is again massive level पे अगर outbreak होता है, तो training is very important. So these are certain aspects. If you want to highlight, I would like to add one point कि ये हाँ बोले प्रवेश. I have a question from Mansi that why every year we see a lot of zoonotic diseases coming out in Kerala. So specifically अब मैं इतना इसको specifically नहीं बता सकती हूँ, but generalize अगर मैं बोलूँ तो it is one of the outcomes of even the climatic change impacts also, and जो even Nipah virus में भी थोड़े mutations हो रहे हैं, it is because of that also somewhere. So that is why frequent outbreaks are happening there. कौशिक आप बोलेंगे कुछ? फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्लांटेशन इकोनॉमी है बनाना और एरियाज का, उसमें चांसेस रहता है बैट का रहने का, तो ये हो सकता है. दूसरा कि केरला, आप गौर करेंगे केरला नॉर्थ ईस्ट दो जगह है जहां पर देयर इज एमर्जेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज ऑल्सो, एंड ऑल्सो तो रेन फॉरेस्ट एरिया एंड प्लेन्स भी उसके पास है, लैटराइट सॉइल भी है और रेन फॉरेस्ट एरिया भी है. तो एक जो कॉम्बिनेशन है, तो ये कॉम्बिनेशन रिसोर्ट्स टू वेट
सीजनिंग क्लाइमेट, जिसके कारण जूनोटिक डिजीज बढ़ने चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो एक छोटा सा इसमें है ये सिर्फ कनेक्शन, ये बाकी है तो ना कि ज्यादा हाईलाइट जो हो रहा है केरला स्टेट का हो रहा है, बट अगेन जैसे अभी हमने देखा कि जो एंटीबॉडीज मिली है वो हमें 14 स्टेट से भी मिली है, तो वहां से इट माइट बी पॉसिबल कि केसेस इतने रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि केरला एक तरीके से हॉटस्पॉट भी है, तो हमेशा जो फोकस रहता है केरला पे ज्यादा रहता है। और इमर्जेंस की बात कर सकते हैं तो एज एन ओरिजिन हम बोल सकते हैं कि केरला से इट माइट हैव ओरिजिनेटेड। हाँ बोल सकते then again wife cannot be forced to work just because she has a degree। तो जो individual decision making power है उस पे आप अपनी wife को as a husband आप force नहीं कर सकते हो to work just because she has a degree। और मतलब एजुकेशन शुड नॉट बी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग, वो आपके जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी को एनहेंस और रेज करने में आपकी जो रैशनैलिटी है और जो आपकी एजुकेशनल इवन स्किल्स भी है वो आपको इवन हाउस होल्ड लेवल पे भी जो डिसीजंस लेने में हेल्प करता है, दैट इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट जो इम्पोर्टेंट है। तो एज अ फोर्स अगेन वाइफ्स के ऊपर आप नहीं यूज कर सकते हो कि शी ऑल्सो शुड वर्क because she has a degree। So merely because a wife is a graduate, she cannot be compelled to work and not claim maintenance from her husband also। So this has been highlighted by the Delhi High Court. It's that dismissing a husband's plea seeking reduction in maintenance payable to his wife। So that's there, and there's no denial that wife is a graduate, but she has never been gainfully employed। So this is aspect. You want to say up something on this? No, we can move on. So cabinet panel clears the funds for dam project in Uttarakhand। So with the recent disasters, definitely dam construction projects, they've also come under focus। And जो जहाँ से approval आया, that is from Cabinet Committee on Economic Affairs। तो funding जो है तो Cabinet Committee of Economic Affairs finally approve करते हैं। So it is for the Jamrani Dam project in Nainital district। सो अल्टीमेट जो ओवरऑल कॉस्ट रहने वाली है पूरे प्रोजेक्ट की, दैट इज अराउंड 2600 करोड़ रुपीस। एंड सो the committee has also approved inclusion of project under the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana accelerated irrigation benefit program also। So that's there। and जमरनी विलेज में ये डैम को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा अक्रॉस द रिवर गोला, जो एक ट्रिब्यूटरी है ऑफ द राम गंगा रिवर इन नैनीताल। सो दीज आर सम निटिग्रिटीज। एंड डेफिनेटली जब हम अब बात करते हैं ओवरऑल ब्रॉडर लेवल पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया स्पेसिफिकली हिली स्टेट्स में, सो डैम सेफ्टी इज अनदर एस्पेक्ट। डैम लोकेशंस, कितने डैम्स होने चाहिए, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कहीं ना कहीं इट लीड्स टू अगेन द सरफेस प्रेशर ऑल्सो। एंड और सो जो नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर है उसको भी कहीं ना कहीं वो चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है कहीं ना कहीं बहुत सारे डिस्ट्रप्शंस या इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं वो लॉन्गर टाइम पीरियड, और उसकी वजह से अल्टीमेटली वी सी की जो डिजास्टर होता है या सपोज अर्थक्वेक भी होता है, एज वी आर सीइंग नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो हैं दे लाई इन द हाई सिस्मिक जोन। सो इफ देयर इज अगेन हाई मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, तो अगेन डैम्स की वजह से एक बहुत ज्यादा बड़ा डिजास्टर हो सकता है। So when we talk about gender equality कैसे हम establish कर सकते हैं और क्या करने की जरूरत है, तो specifically when we take up this article women marriage and labor market participation, so data shows कि there is low labor participation। So generally जो level of female labor force participation rate है globally, it remains relatively low। Even global level पे it is relatively low। World Bank estimates कि as per 2022 estimates जो है worldwide जो labor force participation rate है of women, that was only 47.3%। So we are seeing remarkable advancements also global economies में, advanced countries में there has been a persistent decline in labor force participation rate despite that।
and even this is happening in developing nations as well. So India may, if we look at the trend, so between 1990 and 2022, it has decreased from 28% to 24%. So this fall, it has impeded their growth and hindered their ability to achieve their maximum capabilities. So this is one aspect, and this year we also saw ki jo Nobel Prize in Economics that was also again awarded for this particular subject, and it was again awarded to Golden for highlighting this as the labor force participation rate of the adult woman exhibits a U-shaped pattern during the course of economic growth. So as in when we see ki economic growth, when we are moving forward towards the economic growth, so with growing time, labor force participation rate of women की जो trend रहता है, initially it declines, एक lower or minimum point achieve होता है, and after that it starts increasing. So जो initial decline देखा जाता है in the participation rate, that is due to the movement of production from household, family, farm, and then small businesses then to the wider market. जब वो expand होने लग जाता है and strong income effect उसकी वजह से होने लगता है, तो जब वो पूरा मतलब जो ये impact है, effect है, wider level पे होने लगता है, उस particular time period से labor force participation rate है women का वो increase होना start हो जाता है. So this is one aspect. So what are the factors which contributes to the diminished labor force involvement of married women or their proclivity to exit the labor field after marriage? So here we see that labor market entry जो women की देखी जाती है, that is influenced by a range of individual factors भी है, societal factors भी है, and which definitely impacts even the married woman to a greater extent than the unmarried counterparts. So several variables contribute, like limited labor participation of women, like the religious and the caste affiliations, one of the social factors. Geographical location is there, then wealth of the household. When a woman get married, so even this also is one of the factors जब हम बात करते कि whether she even individual जो decision भी रहता है कहीं ना कहीं इस basis पे भी रहता है, then prevailing societal norms surrounding a woman's employment outside the house क्या है. So these are some things which influence them, but ultimately कहीं ना कहीं जो ये even challenges भी exist करते हैं, we are seeing कि as an example, as an important case studies also, we are seeing women emerging in the leadership positions also. So despite all the challenges, अगर आपको कुछ करना है तो still they keep doing that, they keep fighting and they emerge out stronger out of that. और बाकी क्या challenges हो सकते हैं, तो when the women they decide to resume the professional careers upon marriage, so they tend to exhibit a preference of some employment opportunities that offer enhanced flexibility and they are situated in close proximity to their residences. तो यहाँ पे even जो ऑफ लेट आफ्टर द COVID-19 पैंडेमिक हमने वर्क फ्रॉम होम वाला जो कंसेप्ट इमर्ज होते हुए देखा है, तो इवन दैट वुड बी ऑल्सो एडिंग more of women participation in the labor force. So women they focus more upon flexibility options kya hai? So they also encounter the gender asymmetrical professional cost as a result of several societal constraints resulting in gender disparities. Premarital career selections hote hain, income inequality hoti hai age at marriage, and then decisions about the fertility decisions. So these are multiple factors. Apart from this, women they are more inclined to engage in labor market primarily driven by economic constraints that stem from poverty. तो जब again ऐसी situation होती है तो तभी as a compulsion they enter the labor force and they work. So ये ज़्यादा हमें देखने को मिलता है. So that's there. Now solutions क्या है? So one of the solutions again जो flexibility option है या हम growing size of gig economy की जब बात करते हैं तो therein their participation can increase. Work from home के concept से their participation definitely that can be increased. So literature on female labor force participation rate, it has underscored the noteworthy impact of social and cultural elements on women's choice about their entry into the labor market. So when we look at the solutions in order to promote women's empowerment,
So we talk about women-led development. We are seeing कि specifically India में भी जब हम compare करते हैं STEM participation, STEM industry, STEM sector में, so India में that is comparatively higher. So we are moving in that direction, but जो pace of change है that is very slow. So even when we talk about the availability of crèche facilities, so right now we see absence of adequate daycare services, which are frequently they act as a disincentive for the women as well. So we can enhance such types of facilities, ensure that they're available, private sector maybe, public sector maybe, and it's important to enhance quality, accessibility of the daycare services or the crèches. And apart from this, गवर्नमेंट ने जो कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, अगेन क्रेच के ऊपर ही अगर हम फोकस करें तो नेशनल क्रेच स्कीम फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वर्किंग मदर्स, दिस हैज बीन अनाउंस्ड. सो इम्प्लीमेंटेशन पे अब हमारा मेन फोकस होना चाहिए, एंड पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट इंक्रीजिंग द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैरिड वुमेन, क्योंकि मैरिड वुमेन के केस में हमें बहुत लोअर अमाउंट ऑफ पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, तो उसको इंक्रीज करने के लिए दिस इज बीइंग फोकस्ड अपॉन ऑलरेडी. And apart from this, provision of secure transportation hona chahiye for the women, expansion of the part-time job possibilities, that would also serve as a kind of catalyst, and it would also attract more women in the labor force. So these are some of the important nuances and dynamics around this topic. So if you want to add something, please, you can go ahead. We can promote the contract jobs or gig economy among the women, like making of crafts or web designing, etc. Because they can work at home also. तो वर्क फ्रॉम होम है, उसको एक्सपैंड करके वुमेन को भी दे सकते हैं. दूसरा जो इम्पोर्टेंट एरियाज है कि वुमेन एसएचजी लेड ग्रुप, तो वो उनका भी चैलेंजेस होता है लोन डिसबर्सर का और री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन देयर ओन बिजनेसेस. तो वो एक चैलेंज है वुमेन लेड एसएचजी का. उसमें भी मेल सेंट्रिक पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते, तभी जाकर के मेल को भी पता चल सकेगा कि क्या क्या वुमेन का प्रॉब्लम है एसएचजी में. तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस सॉल्यूशन आई हैव एडेड टू. प्रवेश, यू कैन ऐड इफ यू वांट टू. No, I think it is already in detail, so we can move. So when we look into this topic, legality of using the white phosphorus, so this becomes an important topic from science. So when we look at this recent basically attacks between Israel and Hamas, so Human Rights Watch recently have accused Israel of using this white phosphorus munitions in the Gaza Strip, and ये बोला जा रहा है कि such weapons they put civilians at risk of serious and long-term injury. So 2008-9 में Gaza War 2 में भी there were allegations कि Israel Defense Forces they struck the Gaza Strip with submunitions containing this white phosphorus chemical. So it is a toxic substance, and your summary it has been reported the United Nations. मानसी, I can मतलब इसे मैं ले लेता हूँ ये वाला. Okay, ठीक है. आप स्मॉल एरियाज में कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो व्हाइट फॉस्फोरस है ना, अगर आप यूज करते हो कभी दिवाली के समय में, जो आप पटाखा यूज करते हो ना, तो उसमें जो व्हाइट निकलता है ना, मतलब स्पार्क्स निकलता है, तो वैसे ही एक पूरा बॉम्ब कर रहता है व्हाइट फॉस्फोरस, उससे पूरा स्किन जल जाता है. तो इसमें यही लिखा हुआ है कि इट इम्प्रोव द कन्वेंशन ऑन सर्टेन CCCV imposes certain restriction on use of incendiary weapons. Incendiary मतलब जलना, मतलब जलता है, स्पार्क जलता है और फिर गिरता है बॉडी के ऊपर, जल जाता है. So it creates dense smoke and it hinders the visibility and provides cover for the military maneuvers. But it is also used against, illegally used against civilian also, as we have seen in Syrian war and also we are seeing in Gaza war too. So white phosphorus, it is subjected to the rule of principle of humanitarian law, international maritime law, which says that it should minimize harm to both civilian and combatant in arms conflict. तो white phosphorus को use नहीं करना चाहिए under the CCW convention, and it establishes a comprehensive ban on such use of chemical weapon. White phosphorus chemical agent है, it is not covered CWC. तो उसमें भी बहुत लेयर्स होता है. व्हाइट फॉस्फोरस में जरूरी नहीं कि आपका जो आप उसको कैसे मेंटेन किया जाए कि वो व्हाइट फॉस्फोरस ही है. अगर उसमें थोड़ा केमिकल कंपाउंड चेंज कर देंगे
तो व्हाइट फॉस्फोरस से हट के कुछ व्हाइट फॉस्फोरस 1 हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल। तो उससे एक जो लीगैलिटी वाला इशू होता है ना, भोजन उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये एक चैलेंज होता है केमिकल वेपन्स में। तो बस इसको बस तो लूप होल है, नीचे में लिखा हुआ कि प्रोटोकॉल वुड बी क्रिएट बाइंडिंग एग्रीमेंट दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम एंगेजिंग इन यूजिंग दैट एक्सप्लॉइट द लीगल लूप होल। तो बहुत लोग इसको लीगल लूप होल भी यूज करते हैं, CWC और बाकी सबको, क्योंकि इसे फॉर्मूला चेंज कर देंगे लेकिन डैमेज वैसे ही हाँ, रॉ मटेरियल तो क्योंकि वही रहता है। रहेगा। हाँ। ऊपर आप ले सकते हैं मानसी, ऊपर अनहेल्दी लाइफस्टाइल वाला, ओके, अनहेल्दी उसका सोल्यूशन। हाँ, मस्ट गेट इनटू उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं बेसिकली। अनहेल्दी अर्बन इंडिया, वो तो हमें पता ही है ट्रेंड क्या हो रहा है, उसके रिपरकशंस हमें देखने को मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ राइजिंग नंबर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस वी आर सीइंग लाइक obesity, and apart from this we are seeing problems related to even mental health as well. So stress management nahi ho pa raha hai, specifically youth, we are seeing rising number of again suicide attempts at the same time. So this is again a sedentary lifestyle that is being followed. So अगेन इसके लिए वी हैव अगेन प्रीवियसली हमने बात करी थी कि क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो ब्रॉडली तो वी कैन टेक कि जो लाइफस्टाइल चेंज होना चाहिए. नाउ यू नीड टू इंक्लूड फिजिकल एक्सरसाइज एवरी डे. अगेन यू कैन गो एट फॉर जिम या योगा एक्सरसाइज और सेशंस. अपार्ट फ्रॉम दिस, हेल्दी ऑप्शंस ऑफ द फूड चॉइसेस जो इवन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल होने चाहिए. एज वी टॉक अबाउट कि ऑनलाइन एप्स जो है वहाँ पे क्लियरली जो हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल है, सैलड्स है, वहाँ पे आपकी क्लियरली कैलोरीज मेंशन्ड होती है. तो ये इट शुड बी अगेन यूनिवर्सल, जितने भी फूड ऑप्शंस अवेलेबल है सबके ऊपर कैलोरी जो डिटेल्स हैं वो स्पेसिफिकली मेंशन्ड होनी चाहिए. तो कहीं ना कहीं वो भी जो आपका डिसीजन मेकिंग रहेगा कि आप कौन सा अगेन फूड चॉइसेस जो आपकी इन्फ्लुएंस हो सकती है पॉजिटिवली, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके अगेन मेंटली आपको इम्पैक्ट करता है. So this can be one important area, and as we talk about even the promotion of millets also. So often जो एक mindset associated है with the millets also कि it is a poor man's food. So instead of looking it from the perspective of a poor man's food or poor people's food, these are also super foods. So instead of promoting what basically how even our advertising methodology is, so वो भी impact करेगा on the mindset of the people. So these can Okay, be I would solutions from my side. I would add 2 points. कि unhealthy lifestyle, it is needed because of the growing obesity and CVD disease among the people. First of all, unhealthy lifestyle can be prevented and can be cured by both societal measures and individual measures. सोसाइटल मेजर्स के लिए आपको अर्बनाइजेशन प्लान होना चाहिए, ट्रैफिक मैनेजमेंट करना चाहिए ताकि एयर पोल्यूशन कम हो, और फिर साथ ही साथ जो वेस्ट डिस्पोजल वो भी मैकेनिज्म में काम करना चाहिए ताकि जो वेस्ट वाटर बॉर्न डिजीजेस एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज है वो भी कम. और अगर बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल पर, तो अपार्ट फ्रॉम व्हाट मानसी हैज सेड कि पहले लोग को पता ही नहीं होता है कि ओबेसिटी क्या होता है, BMI इंडेक्स क्या है, प्लस उनका ब्लड मार्क जो करना पड़ता है, जैसे साल भर में एक बार कम से कम ब्लड मार्क करना ही चाहिए ताकि पता लग सके कि बॉडी में कितना फैटी लिवर है, या वो पता नहीं होता है. तो उसके हिसाब से अवेयरनेस जनरेट करना चाहिए. और एक सोशल मीडिया कैंपेनिंग जैसे एड्स का किया जाता है, वैसे ही सोशल मीडिया कैंपेनिंग आप CBD और जो ओबेसिटी का भी करना चाहिए. तो ये एरियाज. मेरे हिसाब से 3 या 4 पॉइंट है मेरे. पहला ये कि जो हमारा जो रेस्टोरेंट्स और जो यहाँ पे जो चाइनीज और मैकडोनल्ड कल्चर है, उसमें हमें थोड़ा फूड डिजाइनिंग करने की जरूरत है, जिसमें हम जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं और या फिर जो मिलेट्स हैं उनको उसमें फोर्टिफाई कर सकते हैं, ताकि जो दिखने में लगे वो वैसा ही, लेकिन उसका जो टेस्ट हो वो हेल्दी हो और लोगों की हेल्थ पे नेगेटिव इम्पेक्ट ना करे. दूसरा, जो हमारा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा ऑयल होता है तो उसके भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं. तो एक तो ऑयल, और दूसरा जो भी इंग्रेडिएंट्स हमारे यूज होते हैं वो प्रॉपर FSSAI जो हमारी अथॉरिटी है उससे अथोराइज हो, और उनकी प्रॉपर चेकिंग के लिए हमारे यहाँ फूड इंस्पेक्टर नाम की एक डेजिग्नेशन होती है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. दे शुड प्रॉपरली रेगुलराइज एंड मॉनिटर्ड. We have a beautiful city that is Chandigarh. So every month, every restaurant and every shop is inspected by these inspectors, and we have a quality council of India, which actually takes the grievance redressal of all these things. तो इंस्टीट्यूशन लेवल पे ये करना चाहिए. और दूसरा,
जो इंडिविजुअल लेवल पे आपने बात की वो आपने बता ही दी। और दूसरा ये, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारा अनहेल्दी फूड है वो यही नहीं है कि जो हम खा रहे हैं, जो हमारे फार्मर जो यूरिया यूज करते हैं, तो उस पर भी थोड़ा एक ब्रॉडर पिक्चर के साथ उस यूरिया की जो खपत है उसको कम करने की जरूरत है। वहां पर हेल्दी प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ा जाए ताकि हेल्दी प्रोडक्ट्स हो। और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो अपील है वो लार्ज स्केल पे हो, ना केवल एक्सपोर्ट के लिए बल्कि डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए भी। और उसमें हम बिहेवियरल रिवोल्यूशन ला सकते हैं, बता सकते हैं कि ये दिखने में खराब है लेकिन खाने में इट इज हेल्दी फॉर एवरीवन। तो ये कुछ मल्टीपल स्टेप्स जो कर सकते हैं। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है इसको सॉल्व करने का। ठीक है वंश। ओके। तो अगेन ये भी कहीं ना कहीं इट इज अराउंड दी जेंडर इक्वालिटी, स्पेसिफिकली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में, यहाँ पे अर्निंग्स के अराउंड जेंडर गैप अर्निंग्स में कितना है। So let's look into this only. अगर हम just देखें तो men consistently they earn more than women in all forms of work, with the greatest gender gap which is observed among self-employed individuals. So these are certain facts which can be used at the relevant places and answers. Gender gap in earnings, it has increased for self-employed workers, but जो regular wage workers हैं उनके केस में जो gender gap है वो reduce हुआ है. Then focus on weekly hours worked reveals कि जो women है on average they work fewer hours than men, with the largest gap in again self-employment में ही. और rise in gender gap hours worked is attributed to again increasing labor force participation rates among rural women in self-employment. So self-employment में rural women में we are seeing the labor force participation rate increasing, so that's interesting. But with many of these jobs being part-time in nature, so these are some specific details about कैसे चीजें evolve हो रही है in the labor market. And inequality in hourly earnings, it remains higher in other forms of work like even casual labor and self-employment. So even gig economy में भी, क्योंकि टास्क के बेसिस पे जो आपका अमाउंट पे आउट डिसाइड किया जाता है, वहां पे भी वी नीड टू लुक इनटू कि जो डिसीजन होता है क्या इट इज ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कि इट इज अगेन जो टास्क असाइन किया जा रहा है वुमन को किया जा रहा है या मेल को किया जा रहा है. So these are certain again. So I think here we can learn from our private companions, the private MNCs and corporations which are working in countries, especially having a big, base of women employees as well as of the men employees. So there the work are assigned, there the salaries are assigned, there the profits are assigned on the basis of your efficient and productive work. So that model should be implemented in labor market, in gig economy, in MSME, in the government sector also. So this is a solution. So आप ये बोल रहे हो कि जो बाहर की कंट्रीज में प्राइवेट कंपनीज वर्क कर रही है, बाहर की कंट्रीज में नहीं, मैंने अपना ही बोला है, वर्किंग इज मैंने डिफरेंट. अपना ही बोला, नहीं मैं पूछ अपने रही ही हूँ आपसे. नहीं आपने बोला ना कि जैसे बाहर की कंट्रीज में हो रहा है ऐसा, तो वो इंडिया में भी होना चाहिए ऐसा, यहाँ पे भी होना नहीं, चाहिए. मैंने बोला हमारी कंट्रीज में जो प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है हाँ. उसमें प्रोडक्टिव और एफिशिएंट के बिहाफ पे हर जगह इक्वालिटी है, तो वो मॉडल अप्लाई करना चाहिए लेबर मार्केट में, गिग इकोनॉमी में और जो हमारी पब्लिक सर्विसेज है उनमें. बट यहाँ पे कहीं ना हाँ, कहीं और तो मैं इसमें ऐड करूंगा. फॉर्मल और इनफॉर्मल इकोनॉमी के बीच में आ जाएगा. तो इनफॉर्मल इकोनॉमी में आप इसको कैसे डिसाइड करोगे, वो एक चैलेंज हो जाएगा. तो हमें ज्यादा वर्क या फोकस करना चाहिए पहले ऑन फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, एंड देन डेफिनेटली जो आपने फिर मुझे ऐसा लगता है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी की जहाँ तक बात है तो वहाँ तो मैन को भी प्रॉपर पेमेंट नहीं मिलती है, तो वो लेकिन ज्यादा इनफॉर्मल इकोनॉमी में वुमेन के साथ इशू है, उनको कम वुमेन के मिलता है. साथ लेकिन मैं वो ऐड भी करूंगा, मैं ऐड करूंगा कि जो एफिशिएंसी है विद रिस्पेक्ट टू जॉब्स, वो उसके डिसाइड पर होना चाहिए. क्योंकि अगर देखा जाए मॉडलिंग में, विमेन मॉडलिंग में, या फैशन डिजाइनिंग में, या फिर देखा जाए अदर एरियाज जहाँ पे मेन का विमेन सेंट्रिक काम है, जैसे नर्स हो गया, बाकी सब में, तो उसमें विमेन के पास एक अपर हैंड होता है विद रिस्पेक्ट टू जॉब. फॉर एग्जाम्पल टीचर्स हो गया, डेली केयर हो गया. और मेल के पास रहता है विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल जॉब अधिकतर जगह पे, जैसे पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज हो गया, माइनिंग हो गया, बाकी सब में. तो वहां पर जो जेंडर गैप है वो कैसे मैनेज करेंगे, वो भी एक चैलेंज है. और दूसरा कि कैसे कैलकुलेट करें, वो भी एक चैलेंज है. क्योंकि जो एफिशिएंसी दोनों का डिफरेंट है विद रिस्पेक्ट टू मेंटल हेल्थ केयर, मेंटल केयर, केयर इकोनॉमी, एंड विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल जॉब. तो वो एक कैसे इसको कंपेयर करें,
वो एक सबसे बड़ा चैलेंज फॉर्मल इकोनॉमी में बात कर रहा हूँ। इनफॉर्मल तो बता दिया क्या मेरे को समझ कि नहीं आया फॉर्मुलेशन क्लियरली कि आप कंपेयर क्या चीज कंपेयर करने की बात कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडलिंग करियर है विमेन का, तो वहाँ जो मेल मॉडल होते हैं उनको एज कम्पेयर टू कम मिलता है फीमेल के हिसाब से, क्योंकि डोमिनेशन विमेन का है। वैसे माइनिंग सेक्टर और जो माइनिंग सेक्टर हो गया, पेट्रोलियम सेक्टर हो गया, वहाँ मेल डोमिनेंस ज्यादा है। फॉर्मल इकोनॉमी का बात हो रहा है सिर्फ, यहाँ पे इनफॉर्मल की बात ही नहीं हो रहा, उसमें ठीक है। बात हो रहा है। तो ज्यादा है, तो यहाँ पर फिजिकल काम ज्यादा है, मतलब कि आप माइनिंग के अंदर जाके काम कर रहे हो या उसमें, तो स्टीरियोटाइप भी है प्लस सब काम भी डिफरेंट है। और जो केयर इकोनॉमी है, जैसे नर्सेस हो गया, टीचर हो गया, क्रेश हो गया, क्रेश फैसिलिटी हो गया, तो पोस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटी, वो भी एक मेंटल वर्क है ना, कि आपको केयर पहुंचाना है। तो वो थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव और इकोनॉमी का पार्ट है विमेन, और यहाँ डिफरेंट है। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन कैसे होगा, मतलब फिजिकल है वहां पर थोड़ा डिफरेंट है, तो नहीं, वो इसमें एक चैलेंज मैं है। बताता हूँ कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे वी हैव टुडे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स